are absolutely focused, you are absolutely ready to, kind of stay dedicated. And don't forget one simple rule: winning is a habit, so is losing. Students, आपने देखा होगा क्लास 7th के बाद 8th, 8th के बाद 9th, that's the easy way out. बहुत ज्यादा मेहनत करेंगे तो 8th के बाद 8th में रह सकते, rarest of rare cases में. I'm in love with my school, I want to spend one extra year, right? Then only you possibly can stay one extra year. But otherwise, what happens? You get promoted. So the journey has been very, very simple. Now, if you notice, the toppers who were toppers in 7th, 8th, 9th, somehow they continue to be toppers, most of them. The reason being, there's only one reason. Let me tell you. The reason is winning is a habit, so is losing. I can tell you one of my batchmates, I studied from a school called DPS RKP. I, of course, was not as smart as you youngsters. I had science with eco. So 3 subjects common: English, math, and eco. One of my batchmates in an internal exam, she got an 18 out of 20 in eco. And that was the last paper that was off, the scorecards, scores were shared by the teacher. And suddenly the class, there was absolute silence. And what we came to know that Shruti Grover has stood second this time. You won't believe, students, आंसू के 2 बूंद मोती बनकर टपक गए. She could not hold back. When she did this calculation, 12th class, 17-year-old girl in front of 40 odd students, in front of the teacher, she somehow felt miserable. She did not commit any crime. We were in the ability section at DPS RKP. Then was a crazy thing. It was like everybody gunning for a perfect score. She came second by 1 mark. Well, her pedigree: she went to Stephens to do eco, went to IIM Ahmedabad, worked with HUL, Nestle, Marico, went to Stern Business School at New York. Currently, she's a co-founder of 4 companies. She stays at, Manhattan in New York, which is the most prime location in New York. Winning is a habit, so is losing. तो सबसे पहले मैं बहुत तहे दिल से त्रिपाठी सर का शुक्रिया अदा करना चाहूंगा, because he has been super active with all his social work, and I always volunteer. I get a chance, so I don't stay up. So my request to all of you, math, shortcuts, everything will happen now or never. अभी नहीं तो कभी नहीं. अगर आपने 12th के start में, tonight make a promise to yourself that I will win. Every exam that I appear for, I'll be, if I don't get, I don't come first in class, that's okay. I'll put in my heart and soul. I'll put in my blood and sweat. Bhagavad Gita says, Karmanye vadikaraste ma phalesu kadachan. I don't have to worry about the consequences, but I'll not leave any stone unturned. Swami Vivekananda says, Uttishtata jagrata prapya varan vibodata. Arise, awake, and stop not till the goal is reached. So first goal, almost a perfect score in the subjects that you are likely to appear, which is math, accounts, eco. Today, even in business studies, students are getting 100. I'm assuming most of you are from commerce background. In case you happen to be from science or from humanities, of course, almost a similar scorecard is what you have to gun for. Number 2, now if you look at what is happening around, math, analytical skills is gaining a lot of importance. You not only need to be suave and articulate, good with your personality and communication, you have to be very good with numbers and data and analysis. Look at all the business analytics, data analytics, AI, machine learning. Somehow your analytical skill, the strength in that background will come very handy. You please understand that at the end of it, it is about your basic inherent skills. So what I'll do is, and most significantly, the kind of entrances that you appear for right now, an Indian education system, unfortunately, does not allow you a calculator. Unlike the Western, ecosystem where you don't, they're still okay. But it has tremendous advantages.
you appear for CUET. There are 5 things required for success. Speed, any aptitude test across the globe. 5 basic skills. First, speed. Second, accuracy. Because there is negative marking, unlike your board, and many of you would have appeared for these kind of tests in the past, maybe NTSE or some other exam. You know, you go wrong, you might get 1/4, -1/4, right? Then there is decision making. What questions to attempt, what to leave. Fourth, of course, common sense. And last but not least, knowledge. There are vocabulary based questions. They can ask you who is the vice president. Jagdeep Dhankar, they might ask you who is the chairman of Rajya Sabha. Very easy questions these, right? So let's start with a game. Today I've been told to, just bring in that element of fun with numbers. So let's stick to that game plan. Students, you're allowed to use calculator. I'm trying to share screen. Wait a second. Where is our whiteboard? Just a second. Oh, it's here. If you take 216 cube, am I audible? Can you see the screen? Yes, sir. Yes, sir. Okay, 216 cube, if you use your calculator, it should be something like 100,77,696. I'm just trying to recollect. This is possibly correct. Can you see this? Can you check with your calculator? Yes, sir. It's Yes, sir, it is absolutely correct. Okay, great. Now, if you count them, it's a little over 10 millions. What is 10 millions? A little over a crore. Yes, sir. Little over a crore. Okay. What we'll do is we'll restrict ourselves up to 215. So all of you present here, you will take a number between 100 and 215. You will take a number between 100 and 215. Is that okay? Because 216 is giving us a value greater than a crore. Is this fine? Yes, sir. So Yes, sir. all of you will take a number of your choice between 100 and 215. All of you will take a number between 100 and 215. Don't take decimals, don't take fractions. Avoid numbers ending with 0. What we are doing, students, you will calculate cubes for those particular numbers. So the perfect cubes that you would arrive will be within 1 crore. So what I'll do is I'll give you back the original number. So in process, I calculate the cube root. So we will learn how to calculate cube root of perfect cubes up to 1 crore, up to 10 millions. If you're ready, just raise your hand, unmute yourself, just speak out the number. I'll give you the original number straight away. Let's begin. Sir, 201. No, don't give me the number. Give me the final product. Give me the cube. I'll tell you 201. 77,62,392. I missed out. Speak again. 77,62,392. 198 cube root. Yes. I don't have a calculator, incidentally. First, I'll keep my hands here so that you know I'm not using a calculator. So will you accept numbers in millions like in the international standards? Yeah, so we'll do it up to 10 millions. Absolutely. Why not? Okay, sir. 9,393,931. 211 cube root. Yes, sir. Yeah.
The 1 lakh, sorry, 1 million, sorry, 12 lakh 95,029. 109. Yes, sir. Yeah. 46 lakh 6 lakh. 57,463. All right. That looks like 167. 19. Right. Sir, 6 lakh Okay, 36,056. it will not work like this. It will not. Please raise your hand, and then sir will ask the name, and then otherwise it will not work. Bacha, Okay, please. Drishti. So 40,81,544. 40 lakhs, you said. 14 lakhs. Okay, 14 lakhs. Then what did you say after? I got confused between 14 and 14 lakhs 81,554. Okay, 114. Yeah. Okay, Aryan Vashisht. Sir, 56 lakh 39,752. All right. This looks like 178. All right, Jyoti. 19,53,125. 125. Yes. Shivarpit. Yes, sir. 98 lakh 344. 214. Kanav. Sir, 82 lakh 42,408. 202. Vanshika. So 16,85,159. 119. Akriti. 15,20,875. 115. Medha. Yes, sir. Medha. 53,000, 53 lakhs 59,375. All right. 185. Sanyam. Shyam, you can ask your question, please. Unmute yourself. Sir, 6 lakh 36,000. I missed out. Please again. Yes, Shyam. Shyam, you can ask your question. Unmute yourself. Okay. Shiksha. Yes, sir. 20 lakhs 376. Okay. If I heard it correctly, it should be 126. Maulik. Yes. 6,434,856. If I heard it correctly, it should be 186. Yeah. Arnav. Yeah, Arnav Jai. Yes, sir. So 13 lakh 67,631. 111. Prasansha. 1,03,823. 1 lakh. 1,03,823. 1,08,000, you said. Can you spell out the digits? 1,03,823. Okay. Looks like 47. Yeah. Okay. Sorry, I just smaller numbers sometimes. Okay, Pragya. Yes, sir. 19 lakhs 6,624. 124. Soma. So 24 lakhs 6,104. 144. Okay, let's stop here. You see, this is a session on, this is an internship where you are trying to understand finance, where Dr. Tripathi is giving you the finer nuances of how to pick a good company, where I wish I were that smart and made money, where I always lose money somehow, so I keep telling Dr. Tripathi that I wish I had and he never accepts me as a student. I don't know why. So so I never make money, somehow I try to
pick up all blue chips and all that you are learning. So I don't want to kind of bore you to death today. What I'll do is I'll just teach you quickly 2 easy techniques. This is also equally easy, not very difficult, not very difficult at all, but this this is slightly technical, but you'll have to memorize cubes up to 21. So what I'll do is we might be doing a separate session which will be purely on skills enhancement later, and because I don't want to be an obstruction between you and Dr. Tripathi, so I'll pick up 2 easy techniques today. Is that okay? Will that work? Just to tell you that these are all very easy, simple techniques. Now, so all of you present here now, you will take 2 numbers. You will take 2 numbers. And there are 2 preconditions. First condition is that both the numbers must end with a 5. The second precondition is that the difference should be exactly 10. Multiply them. Don't tell me the answer. Like 25 times 35, 875. 485 into 495. Restrict yourselves till 500 into 500 so that when I'm teaching, you'll be able to correlate. Okay? So any 2 numbers, मैं फिर से repeat कर रहा हूं for the benefit of those who missed out. आप सभी students ने अपने पसंद के 2 numbers लेने, दोनों numbers के दरमियान difference 10 होना चाहिए, दोनों numbers के बीच difference 10 और दोनों numbers 5 में end होने चाहिए. Vanshika, give me the 2 numbers, not the answer. Vanshika Sharma. Any 2 numbers, 85 and 95. 8075. Shiv Arpit. Not audible. Unmute yourself. 15 and 25. 375. Shiksha. 95 and 105. 9975. Shreya Sharma. 5 and 395. Sorry. 385 and 395. 385. 152075. Yuvika. 5 and 225. 225 times what? 65. No, difference should be 10. Kanav. Sir, 805 into 815. Are you sure you've done your calculation? 656075. Yes, sir. Soma. Soma. So 165 and 100 and 175. 28875. Vanshika. So 75 and 85. 6375. Manas. 25 and 35. 875. Okay, let me teach you the technique straight away. So, students, what we do is, this is incidentally based on a square minus b square. So let me take 2 simple numbers. Can you all see is the whiteboard legible to you? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. All right. Yes, sir. I've taken 2 such numbers where the difference is exactly 10 and the numbers end with 5. So the first step is identify the greater of the 2. Identify the greater of the 2. Which is greater? 35. 35. पक्की बात लॉक कर दिया जाए? Yes, sir. आपसे मुकाबला करना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है. The first step is identify the greater of the 2. Very easy. Second step, exclude 5. What are you left with? 3. 3. What is 3 square? 9. 9. Minus 1. 9. 8. Minus 1, 8. And 8. write a 75 at the end. That's all. So when one of you asked me 165 times 175, all I did was identify the greater of the 2. Which is greater of the 2, students? 175. I found 175. I excluded 5. I was left with 17. What is 17 square? 289. Minus 1? 288. 288. 75 at the end. That's all. Is that okay?
Yes, So sir. for example, one of you asked me 385 into 395. Now what I did, I know how to calculate, squares up to 1033. If you memorize square, so this is 1521, so I said 152075. That's all. Now you can check with your calculator whether it holds good or not. And students, you'll be surprised to note that this is based on a square minus b square. This is based on a square minus b square. How? Let's take 75 times 85. Sanyam, what are you? I did not follow what you're asking me now. 63. Okay. So this is nothing but 80 minus 5. And this is nothing but, I repeatedly requested you at the onset that the numbers have to be at a difference of 10. And both the numbers must end with a 5. So what does it lead us to? It leads us to a minus b times a plus b. And what is that? A square minus b square. So I always get as 00 minus 25. So your question why 75 at the end also gets answered. And this part becomes one less. I This think, sir, part- your screen is not changing. Is it? Yeah, the next board which you are using is not visible. You can discontinue this, then again share. Okay, then again share it, then it will be visible. Again, same content is coming, sir. G. Can you rub this content and then use? I don't know, because old content is coming. Right, sir. Can you all see the page now? Yes, sir. Yes, sir. sir. Yes, So this is nothing but simple a plus b into a minus b. That is why 00 minus 25 gives us 75 and it becomes one less. Is this clear? Yes, sir. Yes, sir. Okay. I'll very quickly show you how to multiply. Let's say take something very easy, something very simple. How to multiply by 11, let's say. Okay. Suppose I take a very big number. And why I'm telling you all this is because even the simplest of technique, even the simplest of steps can, okay, suppose I have 8, 6, 4, 3, 8, 9, 2, 4. I'm multiplying it with 11. Now, what do you do? What are the possibilities? One, of course, most of us know our tables, right? We know our tables, so we'll multiply, we'll do keep. Now, the simple step is, first step, bring it down. Second step, just add them. Just with the next value. And keep shifting like this. 9 plus 2 is 11. So 1 is my carry forward. 9 plus 8 is 17 plus 1, 18. 1 carry forward. 8 plus 3, 11 and 1, 12. 1 carry forward. 7 plus 3, 7 and 1, 8. 4 and 6, 10. 1 carry forward, last step, 8 and 1, 9. You know, I mean, you can do your calculations whatever ways you want to. Let me very, very quickly, because I know we are running out of time, how to calculate squares, because you are all eagerly waiting for your master trainer. So I don't want to be in between, but I'm greedy. I don't want to miss out on the opportunity of having 50 plus bright students
Monday evening, right? So teachers Karthik, I think you'll have to mute yourself. Yeah, thank you. How to calculate squares for numbers between 50 to 60? How to calculate squares of numbers between 50 to 60? Last technique that I'm talking of today. Then, of course, it's going to be your core agenda for the timing. Yes, sir. Please continue. He Yeah. has been removed. He has been removed. Okay. So all of you kindly take a number of your choice between 50 and 60. आप अपने पसंद का एक नंबर ले लें 50 और 60 के बीच कोई सा भी एक नंबर and calculate its square quickly, very fast. Okay. Now, students, just to save time, I'll start with 51. 51, 2601, 2704, 2809, 2916, 3025, 3136, 3249, 3364, 3481, 3600, 3721, 3844, 3969. Sorry, we are only doing up till 60. Very simple, very, very basic method. You'll be surprised to note, students, that this is based on a plus b whole square formula. What is 50 square? 50 square. 2500. Very good. 2500. Yes, 5 is 25, 0 is 00. Excellent. मैंने शुरू में कहा आपसे मुकाबला करना मुश्किल नहीं नामुमकिन है. You don't have to write dynamite here. They're all dynamites. Okay, first number 51. What is the value at units place? 1. Only. But One. that's it. Add this to 25 base 26. And what is 1 square? 1. 1. 1. I got 2 One. spaces, so it becomes 0, 1. That's all. That's all. For example, my next number is 52. What is my value at units place? 2. 2. Very good. So I add 2 to my base 25. It becomes 27. What is 2 square? 4. 4. 04. 53. Add 3 28. and 3 square. 9. 54. 29. Now no more 0 because I've got 2 spaces and my square is exactly 2 digits. So I don't have to prefix a 0. So if you continue to proceed forward, 55 is 3025, 56 is 3136, 57 is 3249, 58 is 3364. What am I doing? I'm adding that single digit and I'm attaching the square of that single digit. Is that okay? Yes, sir. Yes. Yes, sir. Great. Students, it's been a pleasure to be with you. And I would like to thank Dr. Tripathi for giving me this opportunity of being Thank you. able to interact with you, shining stars. Can I leave my number in the chat box? Yes, sir. It will be very helpful for the bacha if they So want because to anybody know all wants these to, techniques. what So you it have to will- do is not just technique, any questions related to careers also, because this is something I'm passionate about. So I'm Rajesh Mishra. As sir mentioned, I headed many organizations in the past. Now I do run a small organization also, and we do train students, but today is not the, so this is my number. You can reach out to me for all your queries. I'll be happy to answer them. 98100 33495. We have only one small, humble setup at Connaught Place. That's the only place where we are located, unfortunately. You're more than welcome to. The best way to connect is send me a hi message on WhatsApp. Just write that you're Dr. Tripathi's students. You will be treated very, very specially. Don't worry. Thank you so much. Thank you, sir. Thank you very much. All the best. Thank you, sir. May all I your have dreams promised. come true. May all your dreams come true. May you reach the heights of the sky, students. Thank you so much, sir. Sir, thank you so much. Thank you, sr. Thank you Yeah. very much. Thank you, sir. Any of the Thank you, students want sir. to thank Mr. Rajesh Mishra? Any Thank of you, the sir. students Thank want to you, thank sir. Mr. Rajesh Mishra? Please.
Who want to take the initiative today? Anyone? Very fast, we do not have time. Sir, I would like to thank you so much for telling us so many tricks about mathematics. Earlier, we used to think that maths is just boring stuff and difficult of including so many multiplication, division, and now you have made it so easy for us. So I would like to thank you for this. Thank you, Just sir. to, Thank you, Master. just to add, before I leave, if you look at the Mona Lisa painting, which is now removed from Louvre, it was there earlier. It is based on Fibonacci series. The best music of Mozart is APGP. The shape of a violin is a golden ratio. So there is math in everything that you and I do. Thank you so much. Thanks a lot. Thank you, sir. Thank you very much. Thank you so much. Thank you, sir. Thank you, sir. Now, what we are going to do today, today's topic is valuation of equity. So I hope you all are interested how you value what is the correct price of what is the price, actual price, and what is the correct price. I'm telling you what is the current price in the market, what is the actual price. You go to the shop, shopkeeper says that this potato is 20 rupees kg. So potato should be having what price? Should I buy or not? Then you should be having the value of that potato. If you know this potato value is 25 rupees and he is giving you in 20 rupees, you will buy. If you see that potato's value is only 18 rupees and he is giving you in 20 rupees, you will not buy. So price and values are two different things. Price and value is two different things. If you are getting something at lower than its value, you should buy it. And if you are getting it at higher price, you should avoid it. This is the simple concept in everywhere in the life. आप जाते हैं कोई चीज, हाँ जी ये कार इतने की है, नहीं यार ठीक है इतना दिस तो इफ यू एप्पल फोन है, नहीं इसका ब्रांड वैल्यू है, दैट इज द रीजन यू आर बाइंग इट, बिकॉज यू आर गेटिंग वैल्यू विद इट. नाउ वैल्यू में फर्स्ट ऑफ ऑल आई वांट टू एक्सप्लेन कि जनरली हम सोचते हैं एमआरएफ का शेयर 70,000 रुपीज, ये तो महंगा है. वोडाफोन का शेयर 7 रुपीज, ये तो सस्ता है. नो, दिस इज नॉट लाइक दैट. इट इज जस्ट लाइक सेइंग कि हाँ जी ये आलू है, ये 2 रुपए किलो है, और एप्पल है ये 200 रुपए किलो है, तो एप्पल महंगा. नो, एप्पल इज नॉट महंगा. यू कैनॉट कंपेयर एप्पल विद आलू. यू कैनॉट कम. इट इज जस्ट लाइक कि आपने 2 BHK घर खरीदा, वो 5 लाख का आया, किसी ने 3 BHK हाउस परचेस किया एंड इट कॉस्ट 10 लाख रुपीज, तो कहोगे उसने तो महंगा खरीदा. नो, उसने महंगा नहीं खरीदा. जो चीज उसने खरीदी है उसका प्राइस देखना पड़ेगा. तो यहाँ पर हमें थोड़ा सा जब शेयर की वैल्यूएशन करते हैं तो हमें देखना पड़ेगा इस शेयर की एक्चुअल वैल्यू होती क्या थी. कभी भी इफ यू कंपेयर वोडाफोन विद रिलायंस, both are in the, somebody is doing Jio, somebody is Vodafone. Reliance is costly, Vodafone is cheaper, I will buy Vodafone. No, this is not like that. तो ये मैं हमेशा कहता हूँ, I don't know how many people you are knowing. I think some of you have shared the link with your friends also. Anyone, because this problem I'm facing for the first time in this, so I can assume there is increase in number also. So this is my assumption that one of you must have shared the link with your friends. My humble request to the mentor teacher, please take care of it, because it is going to hamper them. I do not want. My humble request, do not do it in future. Now, so whenever you are having the valuation, how to do the valuation, what we should be knowing and we should not be knowing. The thing is, we have to think about what you are going to buy. What you are going to buy a share. Why you are going to buy a share? There are two types of things. Why you are going to? मुझे एक शेयर खरीदना है. You want to buy potato. Why you want to buy potato? You want to consume it. Why you want to buy this shirt? You want to wear it. Why you want to buy a house? Because you may be for the investment purpose, or you may be using it for living in that house. Same way, why you are buying this share? Share you buy either because of its earning. ये जो company है, if I will buy Reliance
जो भी कमाएगी, वट एवर द अर्निंग ऑफ द रिलायंस, सिंस आई एम ऑल्सो द ओनर, आई ऑल्सो हैव द शेयर, मुझे भी उस अर्निंग में से कुछ मिलेगा. दैट इज द वन रीजन. सेकेंड थिंग, इफ आई एम बाइंग रिलायंस, आई एम बिकमिंग द ओनर ऑफ रिलायंस, तो जो भी आज रिलायंस के एसेट्स हैं, आई एम ऑल्सो पार्शियल ओनर ऑफ दैट एसेट. दो ही रीजन है टू बाय एनी शेयर. आई एम रिपीटिंग, ईदर एक्सपेक्टिंग रेवेन्यू इन द फ्यूचर, प्रॉफिट इन द फ्यूचर, कि हाँ ये रिलायंस है, आप मैं खरीदूंगा रिलायंस, और मे बी एयरटेल है, मे बी बजाज फाइनेंस है, मे बी एशियन पेंट है. आई एम बाइंग एशियन पेंट बिकॉज एशियन पेंट विल बी हैविंग अ लॉट ऑफ रेवेन्यू इन ईयर्स टू कम, देन प्रॉफिट्स, और जो प्रॉफिट होगा उसमें मेरा भी पार्ट होगा. और आई एम बाइंग एशियन पेंट बिकॉज एशियन पेंट के पास लैंड है, मशीनरी है, फर्नीचर है, कैश बैलेंस है, बॉन्ड्स है, इन्वेस्टमेंट्स है. एंड इफ आई एम द ओनर ऑफ एशियन पेंट, आई 1%, 2%, वॉट एवर द परसेंटेज यू आर बाइंग, देन जब भी ये कंपनी डिसॉल्व होगी या ये कंपनी में मेरा भी शेयर हो गया, मैं भी इसका ओनर हो गया, इसके इतने एसेट्स का, आई एम ऑल्सो द मालिक. तो दीज आर द टू रीजन. क्लियर है बात? नाउ इफ आई एम बाइंग एक्स कंपनी जिसके पास 10,000 करोड़ के लैंड है, एंड आई एम बाइंग अनदर कंपनी जिसके पास 2,000 करोड़ के लैंड है, तो दोनों को आपस में कंपेयर नहीं कर सकते. हमें तो उस पर्टिकुलर कंपनी को देखना है, व्हाट इज द एसेट विद द कंपनी एंड व्हाट इज द एक्सपेक्टेड रेवेन्यू और एक्सपेक्टेड प्रॉफिट ऑफ दिस कंपनी. ऑन दीज टू क्राइटेरिया यू कैन वैल्यू द शेयर्स. दीज आर टू क्राइटेरिया. अब मैं आपको थोड़ा सा, सम ऑफ यू मे बी हैविंग द रूरल बैकग्राउंड, आई डोंट नो, गुड़गांव से अगर आप लोग हो तो थोड़े कम होंगे, और अगर आप शहर से हैं तो मैं आपको थोड़ा सा एग्जांपल. जब गांव में जाओगे और किसी से पूछोगे बड़ा आदमी कौन है, हु इज कंसिडर्ड टू बी बिग मैन, जिसके पास खूब लैंड होगी, बड़ा सा घर होगा, लैंड होगी, दैट पर्सन इज कॉल्ड एज बिग पर्सन. नाउ इफ यू गो टू गुड़गांव, दिल्ली, वहां पे बड़ा आदमी कौन है? वहां पे बड़ा आदमी वो है जिसकी सीटीसी सबसे ज्यादा है. ओ, इसकी सीटीसी 2 करोड़ है, इसकी सीटीसी 3 करोड़ है, वो बड़ा आदमी. वो कोई कंपनी का एमडी है, कोई एमडी है, उसका लैंड नहीं होगा, वो भी एक फ्लैट में रहता होगा, आप भी एक फ्लैट में रहते हैं. एवरीबडी इज इन वन फ्लैट इन गुड़गांव. वन फ्लैट, किसी का फ्लैट का थोड़ा दाम ऊपर नीचे हो सकता है, बट हु इज बिगर पर्सन, किसको इकोनॉमिकली एंड ऑल कंसिडर्ड? वो जिसकी सीटीसी ज्यादा है. तो सीटीसी ज्यादा मीन्स रेवेन्यू ज्यादा है, प्रॉफिट ज्यादा है. So there are companies also are two types. One is called as गांव वाली company and one is called as शहर वाली company. One is called as गांव वाली company means old type companies, old thoughts, and one is called as new thoughts companies. I'm giving you background relate करने के लिए ताकि आप जीवन में इसको relate कर पाए, कभी भूल ना सके. Now, what are these गांव वाली company, old type companies? Old type companies are those companies in which when you are setting this company you require land चाहिए, फर्नीचर चाहिए, बिल्डिंग चाहिए, मशीनरी चाहिए, आपको तब जाके वो कंपनी स्टार्ट होगी. फॉर एग्जांपल टाटा स्टील ले लो, मारुति ले लो, some JSW स्टील ले लो, some VIP, बाटा, these type of companies which are mainly manufacturing in nature. उनके लिए बहुत मारुति है, आइसर मोटर है, some sugar companies are there if they have to set up sugar mill and all, some cement companies are there. इनको अगर सेटअप करना है तो they require lot of land, lot of machinery, lot of furniture, building and all, then these companies starts. So this is called an old type company, गांव वाली company. Now if you are buying this company in this situation, उनकी आपको assets देखना पड़ेगा कि अगर मैं इस कंपनी में जा रहा हूं, खरीद रहा हूं, तो इसके बाद लैंड कितनी है, बिल्डिंग कितनी है, मशीनरी कितनी है, फर्नीचर कितना है. दीज ऑल थिंग यू हैव टू. नाउ शिफ्ट टू द शहर वाली कंपनी. अचानक से आपके पास एक कंपनी आई, paytm.com. न लैंड है, ना बिल्डिंग है, ना फर्नीचर है, ना मशीनरी है, किसी मॉल में, किसी वहां पर एक ऑफिस रेंट पे ले लिया है, वहीं पे उनके एम्प्लॉइज बैठे हुए हैं, एंड नाउ दे आर डूइंग द बिजनेस. दे डू नॉट हैव लैंड, बिल्डिंग, मशीनरी, फर्नीचर. दे हैव ओनली वन concept. Or you go to Swiggy, what Mr. Ashok Vardhan was saying yesterday, or you go to Uber. So these type companies do not have some land, machinery, furniture को required नहीं है. आज उनके employees इस बिल्डिंग में बैठे हो, कल को हो सकता है कहीं हो, मे बी वर्क फ्रॉम होम कर रहे हो, सब अपने अपने घर बैठे हो. They are doing on laptop. They do not have anything, but they have a concept. So all the new
कंसेप्ट ऑफ टेक्नोलॉजी बेस्ड कंपनीज और सर्विस बेस्ड कंपनीज, जिसमें TCS, इन्फोसिस कंपनी आती है, बैंक्स आते हैं, बहुत सारे बैंक्स हैं, जो सारे बैंक्स की वैल्यूएशन इट इज कॉल्ड एज द सर्विस प्रोड्यूसिंग कंपनीज, टेक्नोलॉजीज कंपनीज, मॉडर्न कंपनीज, दिस स्टार्टअप्स एंड ऑल जो आप लोग पढ़ते हैं, दीज आर द कॉल्ड शहर वाली कंपनी, न्यू एज कंपनीज, एंड दिस स्टील कंपनीज, सीमेंट कंपनीज, एंड देन ऑटोमोबाइल, देन मैन्युफैक्चरिंग, शूज, ड्रेसेस एंड ऑल दिस कंपनी, दैट इज कॉल्ड गांव वाली कंपनी। आई होप दिस कांसेप्ट क्लियर। कोई डाउट है इसमें किसी को? No, sir. No, sir. Now, there are companies जहाँ पे थोड़ा बहुत मिक्सचर भी होता है, नो डाउट। सम जैसे अगर मैं आपसे इफ यू गो कि हाँ one company is based on that old concept, maybe Asian Paint. If you see the working process of Asian Paint, they have land, building, machinery, furniture, but they have very good software inventory management system. उनका मैनेजमेंट सिस्टम ऐसा है, why Asian Paint is doing excellent in last 20-25 years. उनको ये पता होता है किस दुकान पे अगले 4 घंटे में किस कलर के किस पेंट की जरूरत पड़ेगी. They know this thing by their data analysis. थोड़ा सा गूगल करके देखना. They do not have inventory anywhere with the stockist, और उनके पास कोई सिस्टम नहीं होता. उनकी ट्रक्स घूमती रहती हैं और 4 घंटे में आपके पास डिलीवरी देती है. HUL नहीं दे पाता, RTC नहीं दे पाता, बट एशियन पेंट देता है. इंडिया में जो फर्स्ट कमर्शियल कंप्यूटर इंडिया में इंट्रोड्यूस हुआ, दैट वाज बाय एशियन पेंट. एंड देन दे स्टार्टेड, anybody know this person Sayam Jain? He is asking for the entry. I have removed him. So any school teacher or bacha you know? Yes, sir. Sir, You know? Pawanji is speaking. This is my school, sir. Singing Okay, from my okay. school. Thank you, sir. Now, so please, so that Asian Paint has a mixture. Gamwadi company, that means furniture, machinery, and then they are using the technology in their distribution process. How they need not to keep any warehouse or something. They are manufacturing, and उनके trucks जो हैं वो courier systems and all के through आते हैं और वहाँ से distribution चलता रहता है. तो that there is a mixture also. तो गांव वाली कंपनी का वैल्यूएशन करने का अलग मेथड है, एंड शहर वाली कंपनी का, द ओल्ड एज कंपनीज एंड न्यू एज कंपनीज का वैल्यूएशन करने का अलग अलग मेथड है. 2 मेथड. देयर आर मेनी 16-17 मेथड्स. इफ यू पीपल विल डू MBA और समथिंग, यू विल स्टडी ऑल दिस मेथड. बट आपके लेवल पे इस यहाँ पे मैं आपको जो आपका एज है, जो आप समझ सकते हो, उसके बेसिस पे 2 चीजें बताऊंगा विच इज एप्लीकेबल इन ऑल द सिचुएशन. तो वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ. फर्स्ट इज कॉल्ड एज P method. Please write it down. P method, price earning method. Price earning method. This method is used for new age companies. New age companies के लिए best method है to value the get the correct valuation of a share. The P method. Price upon earning. I'm repeating. Price upon earning. मतलब क्या हुआ? मैं 5 रुपए कमाता हूं. सपोज 5 रुपए कमाने के लिए एक एक्स कंपनी है जो 5 रुपए कमाती है, उसके लिए आपको 10 रुपए देना पड़ता है. 10 रुपए. इफ यू वांट टू गेट द शेयर ऑफ दिस कंपनी, यू पे 10 रुपीज एंड यू विल गेट द 1 शेयर ऑफ दिस कंपनी. हाउ मच विल बी योर अर्निंग? 5 रुपए. EPS इज पर शेयर पे आपको 5 रुपए मिलेगा. योर P इज 2. प्राइस अपॉन अर्निंग. योर P इज 2, यानी to earn that 5 rupees you have to invest 10 rupees. 10 रुपए अगर आप लगा देते हो तो आप हर साल 5 रुपए कमाओगे. क्लियर है? P क्लियर है? How much you are investing, how much you are paying, that is price, and what will be the earning of the company per share every year, that is called as EPS, earning per share. तो हर 1 रुपए के लिए आपको जितने रुपए देने होते हैं, that is called PE, प्राइस अपॉन अर्निंग. अदरवाइज आप लोग अकाउंट्स में, आप लोग को जो 3rd बुक है उसमें सब रेशियो, एनालिसिस एंड ऑल चैप्टर्स है, बाद में पढ़ोगे. मैं आपको लेमन के लैंग्वेज में चीजें बता रहा हूँ, एज्यूमिंग कि आप कॉमर्स के नहीं हो, आपको अकाउंट्स नहीं आता, इकोनॉमिक्स नहीं आता. मैं तो एक लेमन. 1 रुपए कमाने के लिए जितने रुपए देना पड़ेगा, दैट इज कॉल्ड पी. प्राइस अर्निंग. प्राइस अर्निंग. प्राइस अपॉन अर्निंग. मेरी कंपनी 4 रुपए कमाती है, मुझे 10 रुपए देना पड़ रहा है, दैट मीन्स P इज 2.5. प्राइस अपॉन अर्निंग. क्लियर हो गया? नाउ अब हमें देखना है, मैं रिलायंस में लगाऊंगा, वहां का P 10 है. मैं एयरटेल में लगाऊंगा, वहां का P 12 है. व्हाट डट मीन? कि रिलायंस में मुझे 1 रुपए कमाने के लिए 10 रुपए देना पड़ेगा.
एशियन पेंट में या एयरटेल व्हाटएवर द कंपनी आई नेम, वहां पे 1 रुपए कमाने के लिए मुझे 12 रुपए देना पड़ेगा, विच इज कॉस्टली। एयरटेल इज कॉस्टली एंड रिलायंस इज चीपर। यहां पे ये नहीं देखना कि रिलायंस का शेयर 2000 का है और एशियन पेंट का शेयर 1000 का, उससे मतलब नहीं। शेयर प्राइस डिवाइड बाय अर्निंग, वो 2000 का शेयर है लेकिन वो 1000 रुपए कमाता है, वो 500 का शेयर है लेकिन वो केवल 100 रुपए कमाता है, तो गड़बड़ हो जाएगा। तो प्राइस अपॉन अर्निंग, जब तक प्राइस को अर्निंग से डिवाइड नहीं करेंगे तब तक यू कैन नॉट वैल्यू कि दिस शेयर इज कॉस्टली और चीपर। कार्नव गथानी, यू वांट टू आस्क समथिंग? सर आप एक बार पी मेथड की डेफिनेशन लाइक एक बार वापस समझा सकते हो? प्राइस अपॉन अर्निंग बेटा, व्हाट इज, मैं अभी आपको करके दिखाऊंगा, स्क्रीन पर जाके दिखाऊंगा बेटा, डोंट वरी। ओके सर। मैं कुछ भी नहीं छोड़ूंगा जो आपको समझ में नहीं आएगा, दैट आई कैन प्रॉमिस यू। अगर आप बैठे हो अर्निंग्स हमेशा एनुअल बेसिस पर होती है, मतलब? यस सर, अर्निंग हमेशा एनुअल बेसिस पर होती है। नाउ आई एम शेयरिंग माय स्क्रीन। नाउ this is a screen. I'm taking one company, suppose Reliance Industry ka I'm taking. What is the price of Reliance Industry today? Tell me. 2284. 2284 is the price of Reliance Industry today. And what is the earning of Reliance Industry in the last year? देखिए जरा, Reliance Industry की अर्निंग कितनी थी? It was 89 रुपीज, 90 रुपीज ले लो, ठीक है बच्चा, 90 रुपीज, अप्रोक्स 90 रुपीज दिख रहा है आप लोगों को स्क्रीन पे। 8974 इस कंपनी ने 8974 पर शेयर पे कमाया है। टोटल अर्निंग इसकी थी, टोटल नेट प्रॉफिट था आपका 6785, इसको नंबर ऑफ शेयर से डिवाइड कर दिया होगा, ईपीएस आ गया। आई एम रिपीटिंग, जितनी भी इसकी टोटल अर्निंग थी, कंपनी की टोटल अर्निंग कितनी थी? 67,845। इसको नंबर ऑफ शेयर जितने भी है कंपनी का उससे डिवाइड कर दिया, एक शेयर की अर्निंग आ गई। नाउ वन शेयर इज अर्निंग अप्रोक्स 90 रुपीज एंड प्राइस ऑफ वन शेयर इज 2284। नाउ 2284 डिवाइड बाय 90, बताओ कितना आता है, जल्दी से करो। आप लोग के पास, सबके पास कैलकुलेटर है? अभी मिश्रा जी ने आपको कैलकुलेशन करना भी सिखाया है, मेरी इतनी फास्ट नहीं है। टेल मी, हरी अप। 25.33। नहीं, एग्जैक्ट अगर मैं वैल्यू बताऊं, इट विल बी कमिंग 24.3 कुछ आ रहा हो, ठीक है? देखो यहाँ पे आया, 24.3 आया हुआ है। तो इन दिस वे, अब नाउ ये तो फॉर अर्निंग 1 रुपी you need to pay 24 rupees if you are buying Reliance share. On the other hand, एक और शेयर लेते हैं, सपोज मैं लेता हूं एयरटेल, सेम एयरटेल, भारती एयरटेल। नाउ प्राइस ऑफ शेयर इज 765, देख के लग रहा है सस्ता है। अगर आप देखोगे तो 2000 के कंपेयर में लग रहा है दिस कंपनी इज चीपर, दिस कंपनी इज नॉट चीपर। नाउ सी 765 रुपीज इज द प्राइस एंड अर्निंग ऑफ दिस कंपनी इज 7 rupees. See the EPS of last year, it is 7 rupees. Now divide करके बताओ कितना आता है, P कितना आता है? 109.28. 105.8. 105 109 नहीं, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है? 109. 109.28 109. हाँ 109.28 109.28. नाउ रिलायंस में 1 रुपए कमाने के लिए आपको 28 रुपीज देना है, एयरटेल में 1 रुपए कमाने के लिए आपको 100 रुपए देना है, विच इज चीपर? रिलायंस। लेकिन अगर आप प्राइस देखते केवल, तो रिलायंस क्या लगता 2200 का, एयरटेल कितने का दिखता 600 का। आपको लगता है यार रिलायंस तो महंगा है, एयरटेल तो सस्ता है। सिंस आपको वैल्यूएशन नहीं पता, हम वैल्यूएशन करंट ईपीएस पे भी करते हैं और हम फॉरवर्ड ईपीएस पे भी करते हैं। अब मान लो आप थोड़ा और जब सीख जाओगे आफ्टर, तो आप देखोगे अगले साल एयरटेल की अर्निंग कितने आने वाली है ऑन द बेसिस ऑफ क्वार्टरली प्रॉफिट्स आपके पास आ चुके होंगे, 3 क्वार्टर के ऑलरेडी आ गए, चौथे का एक्सपेक्ट करके। अगर अब देखोगे, अगर मैं इसी में दिखाता हूं, नाउ सी दिस, इफ आई सी क्वार्टरली प्रॉफिट, 3 क्वार्टर का प्रॉफिट मेरे पास आ चुका है, लगभग टीटीएम मेरे पास आया होगा, यहाँ पे देखो। इफ आई सी द टीटीएम ऑफ एयरटेल, आई एम एक्सपेक्टिंग ईपीएस दिस टाइम अराउंड 12 रुपीज, 12.85। अब इसके बेसिस पे मैं कैलकुलेट करता हूं, तो नेक्स्ट ईयर आई एम एक्सपेक्टिंग कि हाँ जी थोड़ा सस्ता हो जाएगा, बिकॉज अर्निंग बढ़ रही है, अगर सेम प्राइस तो थोड़ा सस्ता, बट स्टिल रिलायंस
से कंपेयर करने पे मुझे एयरटेल महंगा है। एंड इफ आई एम अ वैल्यू इन्वेस्टर, आई नो द वैल्यूएशन, आई विल नॉट बाय एयरटेल, आई विल बाय रिलायंस। ठीक है, एक और कंपेरिजन करते हैं फिर आगे बढ़ेंगे। सपोज मैं दो बैंक देता हूं, मुझे पता है इंडिया की बेस्ट बैंक में आईसीआईसीआई भी है, इंडिया के बेस्ट बैंक में एचडीएफसी भी है। इफ आई सी द शेयर प्राइस, एचडीएफसी प्राइस इज अप्रोक्स 1500 रुपीज एंड आईसीआईसीआई प्राइस इज अप्रोक्स 800 रुपीज। तो मुझे लगेगा आईसीआईसीआई बैंक जो है एचडीएफसी बैंक से हाफ पे मिल रहा है, ऐसा मुझे लगेगा। इफ आई एम नॉट अवेयर ऑफ वैल्यूएशन, मुझे लगेगा ये तो सस्ता है, बिकॉज मुझे वैल्यूएशन नहीं पता। ठीक है, लेकिन वही है कि मैं वहां पे पता चला वन मिनरल वाटर की बोतल परचेज कर रहा हूँ जो कि 1 लीटर की है, और दूसरी जगह मैं 500 ml की परचेज कर रहा हूँ। बस मुझे ये दिख रहा है सस्ता है महंगा नहीं, कैसे करेंगे वैल्यूएशन, देखो कैसे करेंगे। आई विल गो टू बोथ द कंपनी, आई विल सी कि what is the price or what is the, see this, I am taking ICICI बैंक, इसका प्राइस है 828, करंट प्राइस इज 828। नाउ व्हाट इज द EPS ऑफ, नाउ EPS इज 11.49। नाउ डिवाइड करके जल्दी से बताओ, 828 828 डिवाइड बाय EPS, EPS इज कमिंग आपका 36.14 है, 36.14। इसी से डिवाइड किया आप लोगों ने? यस सर। कितना आया बोलो बोलो, कितना EPS आया? नहीं, मैंने कुछ गलत डेटा आपका दिया था पहले, ये बैलेंस नहीं प्रॉफिट। सर आपने मुझे कोई और EPS बोला। हाँ ये डेटा है बेटा, 36.14, 36.14 से डिवाइड करो 22.9। मतलब आईसीआईसीआई बैंक में ओके 22.9, आई गॉट इट। इसका मतलब क्या हुआ, आईसीआईसीआई बैंक में 1 रुपए कमाने के लिए आपको 22.9 रुपीज देना पड़ रहा है। ठीक है, क्लियर हो गया मेधा, शिक्षा, कनव। नाउ अब मैं जाता हूं एचडीएफसी में, एचडीएफसी बैंक। नाउ व्हाट एचडीएफसी बैंक, एचडीएफसी बैंक देखने में तो मुझे महंगा लग रहा है, प्राइस इज 1569 इज द प्राइस ऑफ एचडीएफसी बैंक। नाउ इफ आई सी द EPS ऑफ एचडीएफसी बैंक, it is 68.62, 68.62 से डिवाइड करो, कितना आ रहा है? 22.8। नाउ टेल मी कौन सा सस्ता है? एचडीएफसी सस्ता है? यस सर। आईसीआईसीआई कितना आया था? आईसीआईसीआई कितना आया था? 22.9। हाँ जी 22.9 और एचडीएफसी आया 22 पॉइंट समथिंग, कुछ लेसर वैल्यू आया। देख के लग रहा था, if I saw for the first time, I saw that ICICI Bank, I am getting ICICI Bank at half rate of HDFC Bank. लेकिन जब मैंने वैल्यूएशन करके निकाला तो मुझे पता चला नो, वो देखने में तो हाफ है लेकिन फिर भी मुझे HDFC बैंक ज्यादा सस्ता मिल रहा है। क्या ये बात क्लियर हो गई? संयम, यू वांट टू आस्क सम क्वेश्चन? यस सर, जैसे किसी कंपनी का पी रेशियो पर ईयर गिर रहा है तो वो कंपनी अच्छी है? पी रेशियो गिर रहा है तो बेटा उसके 2-3 रीजन हो सकते हैं, या तो उसकी अर्निंग गिर रही है, या पता है कि कुछ डूबने वाला है, उस केस में हो सकता है कि लोग खरीद नहीं रहे कुछ और। देखो दीज आर नॉट, मैंने हमेशा कहा जब फर्स्ट क्लास में मैंने बताया कि ओनली बिकॉज ऑफ पी आप कल जाके शेयर नहीं खरीद सकते। दीज आर सम फैक्ट्स। पी पे भी देखना है, आरओसी देखना है, प्रमोटर। अब मान लो किसी का प्राइस धड़धड़ा के गिरना शुरू हो जाए, अदानी का न्यूज आ गया, अदानी का न्यूज आया, प्राइस गिर रहेगा, हर दिन उसका पी गिरता जाएगा। प्राइस अपॉन अर्निंग, प्राइस अपॉन अर्निंग, अर्निंग तो सेम है, एक दिन में अर्निंग तो चेंज हुई नहीं, साल भर की अर्निंग ऑलरेडी आई हुई है, बैलेंस शीट में आपके पास ऑलरेडी है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। नाउ प्राइस रोज 10% डिक्रीज हो रहा है तो पी रोज गिरेगा। आप कहोगे अदानी अच्छा हो गया, अच्छा अदानी कैसे अच्छा हो गया, न्यूज आई है, पता नहीं कब भाग जाएगा, कब बंद हो जाएगा। तो दैट अदर थिंग यू हैव टू सी, दीज आर द क्राइटेरियाज, बट ऑन वन बेसिस यू कैन नॉट से दिस इज करेक्ट और दिस इज रॉन्ग। ठीक है, मैं तो आपको केवल कंसेप्ट सिखा रहा हूं। ठीक है, वंशिका सिंह, प्लीज आस्क अ क्वेश्चन। Sir, what is the healthy PE ratio for investing in a company? It depends upon industry to industry and company to company.
Okay, sir. You cannot compare the P of a bank with the P of a technology company like Infosys or something. You have to see कि जो टेक्नोलॉजी कंपनी है वो कितने के पी पे कोट होती है इंडियन मार्केट में. इफ एक नॉर्मल टेक्नोलॉजी कंपनी 25 के पी पे कोट होती है एंड आई एम गेटिंग माय टीसीएस एट 20 का पी पे, तो मुझे लगेगा इट इज चीपर. अगर मुझे पता है बैंक्स जो है 20 के पी पे कोट होते हैं, 20 का पी इज नॉट, अब 30 का पी पे मिल रहा है तो आई विल नॉट बाय, और 15 का पी पे मिल रहा है तो आई विल बाय. आई हैव टू सी व्हाट इज द एवरेज. पिछले 5 साल का डेटा देखूंगा मैं कि किस पी पे बैंक्स कोट होते हैं. Okay, sir. अब इफ यू कंपेयर बैंक विद सम वीआईपी और बाटा तो वो गड़बड़ हो जाएगा. ठीक है, दैट इज द रीजन आई कंपेयर एचडीएफसी विद आईसीआईसी, रिलायंस विद एयरटेल. I have not compared some Ultratech Cement with some Bata. So I have not done this because I know how to compare and what to compare. Soma Raghav. Yes, sir. Sir, I want to ask that price earning is also one of the criteria that we decide that we should This invest is or not. one of the criteria, and this is very important criteria. This is very important criteria because अगर यहाँ से मुझे कोई चीज महंगा दिखेगा तो मैं आगे तो कुछ देखूंगा ही नहीं उसको. And so this also goes with the same that हमें valuation पता चले कि like what is the value of this equity. एकदम हमें पता चल जाएगा कि हाँ हमारा ये शेयर महंगा है या सस्ता है, इसकी वैल्यू वो जितनी होनी चाहिए. अब मैं देखता हूँ, एक चीज और बता रहा हूँ, देखो. Yes. अब मैं आपको इसी स्क्रीन पे ले जाता हूँ सीरीज. टेल मी द नेम ऑफ शेयर, एनी वन ऑफ यू हु हैव सर्च कि हाँ ये शेयर बहुत अच्छा है, मैंने सर्च किया है. अभी किया हो? दीपक नाइट्राइट. सर नेस्ले. वन रेज योर हैंड. Anyone? Nestle. Shivpreet Shivarpit, sir. Sir, Deepak Nitrite. Deepak Nitrite. See this. Now Deepak Nitrite. If I will see Deepak Nitrite, how I will see? मैं कैसे देखता हूँ? मैंने देखा दीपक नाइट्राइट जो है आज जो है कितने के पी पे मिल रहा है? सब 27.9. अब मुझे समझ में आ रहा है 27.9 अच्छा है या खराब है. हाउ आई विल सी? पहले मैं देखूंगा इस कैटेगरी की बाकी कंपनी किस पी पे मिलती. पहले मैं देखूंगा. कैसे देखूंगा? मैं इसी को थोड़ा सा, बाकी आप डेटा देके कैलकुलेट कर सकते हैं, बट अब सिंस आई नो द टूल आई विल गो. मैंने देखा हाँ जो कंपनी है वो करीब एवरेज अगर मैं देखूंगा तो 25-30 के पी पे मिल रही है. एक पीडी राइट है 90 पे, दैट इज वेरी कॉस्टली, आई विल नॉट बाय. 11 पे टाटा केमिकल इज 11 पे है तो मुझे लगेगा हाँ दिस इज अट्रैक्टिव, ये सस्ता दिख रहा है. I will do more research. I'm not saying कि I will buy, I will do more. तो इस पूरी कैटेगरी में मैं देखूंगा तो मुझे मेरा दिमाग जाना चाहिए टाटा केमिकल के, बिकॉज इट इज लुकिंग एट चीपर पी इस समय. तो यहाँ से मुझे आइडिया मिल गया. दीपक नाइट्राइट जो है एवरेज पे ही है, ना ज्यादा महंगा है ना ज्यादा सस्ता है. बट देन अनदर थिंग, दिस इज कॉल्ड इंटर कंपनी एनालिसिस. नाउ आई विल डू इंट्रा कंपनी एनालिसिस कि ये दीपक नाइट्राइट जो है कितने के पी पे ट्रेड होता है, इसका क्या फीचर है, क्या इसकी क्या वैल्यूएशन है. देखते हैं जरा पास में. What I will do, there are many tools, but I am telling you one tool. See this. On this is a screen. Here it is P. मैंने इसको P क्लिक किया और मेरे पास इसके लाइफ का P आ गया. जब मैंने देखा इसके लाइफ का मीडियन P 25. That means if it is 25 or below, it is cheaper. At present ये हमें कितने के पी पे मिल रहा है? 27. तो आई विल वेट कि ये 25 के नीचे आ जाए तो ये अपने लाइफ के मतलब जो इसका फीचर्स है उसके हिसाब से थोड़ा सस्ता हो जाए. ठीक है. एक किसी ने कहा था नेस्ले. आई विल सी नेस्ले कि हाँ जी नेस्ले इज कॉस्टली और चीपर. हाउ आई विल सी? आई विल गो to Nestle. First of all, I will compare Nestle with others. 73 के पी पे है. ब्रिटानिया जो है वो 56 है, 65 है. तो एक तो मुझे देख के यहाँ पे लग रहा है कि नहीं जी ये तो थोड़ा महंगा है, लेकिन फिर मैं देखता हूँ हो सकता है कि ये कुछ प्रीमियम कोट करता हो, कुछ अच्छी कंपनी हो. तो देन आई विल कंपेयर इट विद इट्स ओन पी ऑफ पास्ट ईयर. आई विल सी कि व्हाट इज द 10 ईयर का एवरेज देख लो या मैक्सिमम देख लो. तो आई विल सी नहीं जी इसका जो पी है 10 ईयर का एवरेज विच इज आती है 65 एंड करेंटली ये 75 पे है, यानी अपने एवरेज पी से ज्यादा पे है. दैट मीन्स इट इज कोटिंग एट हायर प्राइस एंड आई विल वेट टिल ईदर प्राइस विल गो डाउन
और अर्निंग ऑफ द कंपनी विल इंक्रीज। तब तक मैं वेट करूंगा जब तक कि या तो अर्निंग बढ़ जाए या क्या प्राइस नीचे चला जाए या अपने 65-60 के पी पे आ जाए, देन आई विल थिंक अबाउट इन्वेस्टमेंट इनटू दिस कंपनी। क्या ये कंसेप्ट ऑफ पी मैं आप लोग को समझा पाया कि नहीं समझा पाया? Yes, sir. ठीक। Yes, sir. नेक्स्ट Yes, sir. नेक्स्ट चीज है, Sir, I have a question. नहीं बेटा अभी क्वेश्चन नहीं दे पाएंगे बिकॉज हम लोग रनिंग आउट ऑफ टाइम हो रहे हैं। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, क्योंकि हमारे पास जो डेज है ये फिक्स्ड है। नेक्स्ट बैच स्टार्ट हो रहा है 1 अप्रैल की डेट है। आप लोग के कोई फ्रेंड्स है जो आप लोग को जब आप 7 बच्चे आप लोग के स्कूल में डिसाइड हो रहे थे और उनको नहीं ले पाए, तो प्लीज उनको इन्फॉर्म कर देंगे नेक्स्ट बैच में दे कैन ज्वाइन एंड यू विल शेयर योर ओन एक्सपीरियंस कि ये वर्थ है कि नहीं है, दैट यू हैव टू। तो अगर कोई करना चाहे तो फिलहाल मुझे टाइमिंग की थोड़ी सी लिमिटेशन है, तो प्लीज आप लोग मेरा साथ देंगे। अब मैं क्या करने जा रहा हूँ नेक्स्ट इज, अब ये तो हो गई नई टाइप की कंपनीज, न्यू एज कंपनीज को हम मेनली पी के बेसिस पे देखते हैं। अब बात करते हैं सीटीसी, नया बच्चा शहर में रहने वाला सीटीसी पी देख लिया। अब पुराना गांव वाला उसका क्या देखते हैं, कितने बीघे खेत है, कितना बड़ा आदमी है, कितना, तो दैट एसेट। अब एसेट के लिए जो कंसेप्ट आता है, दैट कंसेप्ट, अर्निंग के लिए जो कंसेप्ट आता है दैट इज कॉल्ड पी। एसेट के लिए जो कंसेप्ट आता है दैट इज कॉल्ड बुक वैल्यू। अब बड़ी पर मुश्किल काम है क्योंकि आप लोगों के टीचर ने पढ़ाया, अभी बुक वैल्यू वगैरह आया कि नहीं आया, मैं आपको लेमैन के लैंग्वेज में ऐसा बताता हूं बुक वैल्यू होती क्या है। सपोज आपको रिलायंस की बुक वैल्यू निकालना है। आज के डेट पे यू डिसाइडेड कि मुझे रिलायंस की बुक वैल्यू निकालना है। मतलब क्या हुआ कि आज रिलायंस कंपनी को बंद कर दो, क्लोज इट, उसके सारी एसेट्स को बेचो, लैंड, बिल्डिंग, फर्नीचर, मशीनरी, जो कुछ है बेचो। बेच के जो पैसे आएंगे उसमें से सारे लाइबिलिटीज को पे करो, क्रेडिटर्स को, बैंक को, एम्प्लॉइज को, जो भी कुछ लाइबिलिटीज उनको पे करो। फिर कुछ पैसे बचेंगे, उस पैसे को हर शेयर होल्डर में डिवाइड करो। जो एक शेयर होल्डर को मिलेगा दैट इज कॉल्ड एज बुक वैल्यू ऑफ रिलायंस। मैं पूरे प्रोसेस को रिपीट कर रहा हूं। सपोज मुझे निकालना है नेस्ले का, व्हाट इज द बुक वैल्यू ऑफ नेस्ले। मैं क्या करूंगा, नेस्ले को क्लोज किया, नेस्ले के सारी एसेट्स को मैंने बेच दिया, सारी एसेट्स, लैंड, बिल्डिंग, फर्नीचर, मशीनरी, सब कुछ बेचा, स्टॉक सब कुछ बेचा। बेच के पैसे आए, उस पैसे से आई पेड टू ऑल द लाइबिलिटीज। ऑल लाइबिलिटीज मींस क्रेडिटर्स, एम्प्लॉइज, टैक्स अथॉरिटीज, कुछ बैंक ओवरड्राफ्ट, जो कुछ पे कर दिया। जो पैसे बच गए दैट आई डिवाइडेड अमंग द शेयर होल्डर्स। पर शेयर जितना पैसा आता है दैट इज कॉल्ड एज बुक वैल्यू। फॉर्मूला के टर्म में बताऊं तो सिंपल है, एसेट माइनस लाइबिलिटीज डिवाइड बाय नंबर ऑफ शेयर। एसेट माइनस लाइबिलिटीज डिवाइड बाय नंबर ऑफ शेयर। इस तरह से हम बुक वैल्यू निकालते हैं। नाउ अब जो बुक वैल्यू है ये भी एक इंडिकेटर है कि मेरा ये जो शेयर है ये सस्ता है कि महंगा है। अगर किसी चीज की बुक वैल्यू निकल के 5 रुपए आ रही है और मैं उसको 6 में खरीद रहा हूं, और बुक वैल्यू निकल के आ रही है 5 रुपए और मैं उसको 4 में खरीद रहा हूं, तो इससे मुझे पता चलेगा कि मैं सस्ता खरीद रहा हूं, महंगा खरीद रहा हूं। लेकिन मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा कि बुक वैल्यू पे ही शेयर आपको खरीदना, उससे महंगा नहीं खरीद सकते। देयर आर शेयर्स जिनकी बुक वैल्यू 100 रुपए है लेकिन वो 1000 पे या 1200 पे कोट होते हैं, वो हमेशा होते हैं। क्यों? बिकॉज बुक वैल्यू में एक बहुत बड़ा एसेट आता है, दैट एसेट कॉल्ड एज गुडविल ऑफ द कंपनी। गुडविल को वैल्यू करने का सबका अपना अपना तरीका है। देयर आर लॉट ऑफ मेथड। अभी आप लोग 12th में आए हो, पहले दूसरे चैप्टर में आप लोग को गुडविल पढ़ाया जाएगा, तब आप पढ़ोगे। एंड हर मेथड से डिफरेंट चीजें निकल कर आती है। और अभी तो 2-4 मेथड ही आपको 12th में है। अगर आप ग्रेजुएशन वगैरह में जाओगे तो देयर आर लॉट ऑफ मेथड, देयर आर लॉट ऑफ assumptions टू वैल्यू गुडविल। तो गुडविल, अब नेस्ले इज नॉट नेस्ले बिकॉज ऑफ कि नेस्ले के पास बहुत लैंड, मशीनरी, बिल्डिंग है। नेस्ले हैज अ ब्रांड। मैगी का एक अपना ब्रांड है। बाबा रामदेव ने कितना भी चलाने की कोशिश की अपना, लेकिन नहीं चला। सुना होगा ना आपने, बाबा रामदेव भी कोई मैगी लेकर आए थे, आई डोंट नो। तो नेस्ले हैज अ ब्रांड। हर बच्चा मैगी, मम्मी घर में नहीं है तो भी मैगी बना लिया, मम्मी सो गई है तो भी मैगी बना लिया, मम्मी कहीं बाहर गई तो भी मैगी बना लिया और खा लिया। कुछ है ना है, मैगी बनाना तो आता है। तो दिस इज द थिंग। तो सेम वे, तो वो ब्रांड की वजह से, वो कंसेप्ट की वजह से, वो मार्केट प्रेजेंस की वजह से किसी चीज की वैल्यूएशन होगी। तो व्हेन आई से एसेट माइनस लायबिलिटी डिवाइड बाय नंबर ऑफ शेयर, तो वहां पे जब एसेट की बात आती है तो वहां पे एक एसेट जो एक बड़ा सब्जेक्टिव फैक्टर है, दैट सब्जेक्टिव फैक्टर इज द गुडविल, इज द रेपुटेशन, इज द ब्रांड वैल्यू।
इज द कन्वीनियंस वैल्यू, जो भी आप उसको मान लो, उसकी वजह से एसेट जो है चेंज होगा। अब मैं उस गुडविल को कहूंगा नहीं जी इस कंपनी की गुडविल एक्स 2 लाख करोड़ है, कोई कहेगा नहीं जी 5 लाख करोड़ है, वो तो जितना करेक्ट आप उस ब्रांड वैल्यू को निकाल पाओगे उतना करेक्ट आप उसकी बुक वैल्यू निकाल पाओगे। तो मैं बुक वैल्यू निकालूंगा, कुछ और होगा, कोई और निकालेगा। लेकिन जब आप बुक्स में देखते हो, मतलब जब आप किसी कंपनी की बैलेंस शीट देखोगे, तो वहां पे गुडविल को हम शो नहीं करते, बिकॉज वहां पे हमारे एएस के नॉर्म्स हैं कि हमें सेल्फ जनरेटेड गुडविल को शो करना नहीं है, परचेज गुडविल को शो करना है, वो सब आप पढ़ोगे बाद में कभी। आपको ध्यान रखना कि गुडविल हम बुक्स में शो नहीं करते, तो इसलिए जो वहां पे बुक वैल्यू निकल के आती है वो कुछ और होती है, लेकिन एक्चुअल में बुक वैल्यू कुछ और होती है। तो आप जब बाई कर रहे हो तो एक्चुअल वाली बुक वैल्यू को ध्यान रखना है, जो कि जिसमें गुडविल भी इंक्लूडेड है। मैं अभी फिलहाल कंसेप्ट के पढ़ में, बिकॉज अभी मैं आपको गुडविल नहीं पढ़ा सकता या मैं गुडविल की वैल्यूएशन नहीं बता सकता, वो सब आप लोग 12th में भी है और आगे जाके और डिटेल में पढ़ोगे। आज मैं केवल आपको नॉर्मल एक्सक्लूडिंग गुडविल बुक वैल्यू क्या है और उसके बेसिस पे रेफरेंस देके आई विल टेल यू हाउ टू कंपेयर दिस शेयर इज सस्ता और महंगा। ठीक है, नाउ सी आई एम अगेन टेकिंग 2 कंपनीज। 2 कंपनी आप अपने से बता दो, कोई भी एक पर्सन बताएगा जो सेम कंपटीटर टाइप की कंपनीज हो। आई डो नॉट वांट कि आप बताओगे एक रिलायंस को और आप बाटा से कंपेयर नहीं करोगे। हाँ संयम, यू वांट टू से टेल मी 2 कंपनीज। सर मारुति सुजुकी एंड मारुति और हुंडई। हुंडई क्या बेटा हमारे शेयर इंडिया के मार्केट में लिस्टेड नहीं है, ऐसा बता। टाटा मोटर्स, ठीक है, हम ले लेते हैं टाटा मोटर्स एंड मारुति सुजुकी। ठीक है, दीज 2 कंपनीज वी आर गोइंग टू कंपेयर ऑन द बेसिस ऑफ बुक वैल्यू, कि बुक वैल्यू कितनी है आज के टाइम पे मारुति सुजुकी की और वो कितने में कोट हो रहा है, एंड टाटा का क्या बुक वैल्यू है और कितने में कोट हो रहा है, इसको हम कंपेयर करके देखते हैं। ठीक है, ना चलो मैं आपके सामने स्क्रीन शो कर रहा हूं। इफ यू सी दिस इज माई स्क्रीन और मैंने यहां पे आपको शेयर लगा दिया। सबसे पहले मारुति सुजुकी। नाउ देयर आर मेथड्स, आप लोगों ने कभी पढ़ोगे, आई डोंट नो 11th में है कि 12th में, एसेट्स माइनस लायबिलिटी डिवाइड बाय नंबर ऑफ शेयर्स। तो अब 2 तरीका है, देखो ये बैलेंस शीट आपके पास है, दिस इज द बैलेंस शीट। आप लोग 11th में सब लोग बैलेंस शीट पढ़ चुके हो। एक तरीका है कि मैं एसेट्स लूं, एसेट्स इज 790, ये मैंने कौन सी कंपनी दी है, विच कंपनी इज दिस, मारुति। नाउ मारुति का जो एसेट्स है दिस इज 79,020 करोड़, 79,020 करोड़। नाउ जब मैं लायबिलिटीज की बात करता हूं तो लायबिलिटीज अगर आप देखोगे तो दिस इज लायबिलिटी इज 2 तरह की है, शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म, 625 एंड 21,215, दीज आर द लायबिलिटीज। 70 लिख लो आप लोग नोटबुक में कहीं, 79,020 करोड़ इज द एसेट एंड लायबिलिटी इज अप्रोक्स 21,839 करोड़। अगर आप करके देखो तो ये आ रहा होगा 21,829। नाउ एसेट्स पता चल गया, लायबिलिटीज पता चल गया, एसेट माइनस लायबिलिटी डिवाइड बाय नंबर ऑफ शेयर कर दूंगा, मुझे इसकी बुक वैल्यू निकल के आ जाएगी। नंबर ऑफ शेयर आपको बता, इसका देखना पड़ेगा कितना है, वो भी मैं बता दूंगा कैसे निकालते हैं, लेकिन आपको गूगल करोगे तो भी मिल जाता है कि व्हाट इज द नंबर ऑफ शेयर्स इन दिस कंपनी। ठीक है, नाउ एसेट। दूसरा तरीका, एक और आसान तरीका है जो आप लोग आई थिंक 12th में है कहीं सिलेबस में। नाउ सी दिस, यू कैन टेक दिस कैपिटल प्लस रिजर्व। कैपिटल प्लस रिजर्व अगर आप करोगे तो सेम वैल्यू निकल के आएगी। दिस शेयर का 151 प्लस 57,030, बिकॉज यू नो द बैलेंस शीट हैज ऑलवेज टोटल, दोनों साइड का टोटल इक्वल है। तो अगर मैंने इस टोटल में से, एसेट साइड के टोटल में से ये 2 वैल्यूज माइनस की हैं तो अल्टीमेटली बच के यही वैल्यू आएगी। ठीक है, तो एसेट माइनस लायबिलिटी किया मैंने तो आया, डिवाइड बाय नंबर ऑफ शेयर्स करूंगा, या मैं कैपिटल प्लस रिजर्व दैट मींस 57,030 प्लस 151 करूंगा तो भी वही आएगा। एसेट्स माइनस लायबिलिटी, क्लास 11th के पहले चैप्टर में आपने कैपिटल का फॉर्मूला पढ़ा था, एसेट माइनस लायबिलिटी इक्वल टू कैपिटल। तो या तो मैं एसेट माइनस लायबिलिटी ले लूं या मैं कैपिटल ले लूं। यहाँ पे कैपिटल मतलब कैपिटल प्लस रिजर्व होता है, ध्यान रखना। यहाँ पे कैपिटल का मतलब वो नहीं है जो कैपिटल में दिख रहा होगा, हमें यहाँ पे कैपिटल मतलब कैपिटल जो रिजर्व है वो भी ओनर्स का पैसा है। ठीक है, जब मैंने इसको नंबर ऑफ शेयर से डिवाइड कर दिया तो मेरे पास एक शेयर की बुक वैल्यू आएगी। आसान तरीका आपको नंबर ऑफ शेयर निकालने का मैं बता देता हूं, बिकॉज आप लोग के दिमाग में आ रहा होगा कि हाँ सर ये नंबर ऑफ शेयर कहां से पता चलेंगे मुझे। तो सबसे आसान तरीका है,
मार्केट कैप फर्स्ट डे मैंने बताया था व्हाट इज मार्केट कैप। मार्केट कैप कैसे निकालते हैं जल्दी बताओ। So price of share multiplied by number of shares. Excellent. Price of share multiplied by number of share. So if I have market cap, if I divide it by current price of the share, मेरे पास number of share आ जाएंगे। If I have market cap, Yes, sir. Yes, मैं sir. अगर इसको डिवाइड कर दूं करंट प्राइस से तो मेरे पास नंबर ऑफ शेयर्स आ जाएंगे। ठीक है, तो मैं इसको डिवाइड करके नंबर ऑफ शेयर निकाल सकता हूं अगर आपको चाहिए तो। अदरवाइज मैं आपको बता रहा हूं स्क्रीनर पे सब कुछ अवेलेबल है। आपको इस कंपनी की बुक वैल्यू निकल के आ रही है 1893, जो मैंने वहां पे एसेट माइनस लायबिलिटी किया, एसेट माइनस लायबिलिटी डिवाइड बाय नंबर ऑफ शेयर्स किया, तो हर शेयर की वैल्यू निकल के आ रही है 1893। ऐसा मेरे पास कल क्वेश्चन आया कि सर जब व्हेन यू आर शेयरिंग द स्क्रीन देयर आर लॉट ऑफ डेटा बट व्हेन वी आर यूजिंग द स्क्रीन वहां पे इतना डेटा नहीं होता, कैसे? देखो मैंने क्या किया है, यहाँ पे आपके पास मेरे स्क्रीन में बहुत सारा चीज दिख रहा होगा, आपको नहीं दिख रहा हो। आपको जाना है यहाँ पे एडिट रेशियो। एडिट रेशियो में जाके मैंने क्या किया है, मैंने बहुत सारी चीजें यहाँ से टिक कर रखी है। सेल्स मार्जिन, डिविडेंड यील्ड, ये सब टिक है मेरे यहाँ पे। आप लोगों पे यहाँ पे अनटिक होगा। व्हेन यू विल बी यूजिंग योर स्क्रीनर ये चीज यहाँ पे अनटिक होगी, तो आप उसको टिक कर लेंगे और सेव रेशियोज एक बार कर लेंगे तो आपका उतनी ही चीजें आ जाएंगी या मोर जितना भी आपको चाहिए। ऑल दोस थिंग विल कम ऑन योर स्क्रीन, और जब एक बार आ जाएगा तो वो हमेशा वही रहेगा, वो चेंज नहीं होगा जब तक कि आप चेंज नहीं करेंगे। ये क्वेश्चन मेरे पास आप लोगों ने भेजा था दिन में, तो दैट इज द रीजन आई एम टेलिंग यू नाउ। तो मेरी जो बुक वैल्यू निकल के आ रही है मारुति की, वो आ रही है 1893। 1893 कैसे किया? एसेट माइनस लायबिलिटी डिवाइड बाय नंबर ऑफ शेयर कर लिया, अदरवाइज डेटा सब कुछ अवेलेबल है। लेकिन नाउ 1893 यानी करीब 1900 की कंपनी मुझे 8500 में मिल रही है। कितने टाइम्स हो गया? कुछ लगभग कुछ 4.5-5 टाइम्स पे मुझे मिल रही है। 5 टाइम्स पे। इसे हम कहते हैं प्राइस टू बुक वैल्यू रेशियो। प्राइस टू बुक वैल्यू रेशियो देखो यहाँ पे निकल कर आया 4.5। कैसे निकाला मैंने? 8518 इज द प्राइस। बुक वैल्यू 1893। 1893 कैसे आया था? एसेट माइनस लायबिलिटी डिवाइड बाय नंबर ऑफ शेयर्स, या मैं कह सकता हूं कैपिटल डिवाइड बाय नंबर ऑफ शेयर्स से बुक वैल्यू मेरी निकल कर आई थी। नाउ मेरा कितने पे मिल रहा है? 4.50। अब सेकंड कंपनी जो आपने मुझे बताया था, क्या बताया था मारुति के साथ? टाटा मोटर्स। सेम कैलकुलेशन आई विल डू फॉर द टाटा मोटर्स। मुझे पता है इसकी एसेट है, हाउ मच इज द एसेट? एसेट ऑफ टाटा मोटर इज 3,15,000 crores. Now what is the liability? Liability of the Tata Motors is 2,89,465 crores. 2,89,465 crores is the liability. Asset minus liability करके you will get the same figure, which will be 26,700 and some 15 रुपीज के आसपास आपका ये आ जाएगा। ना इसको आप प्राइस जब आपके पास आ गया, नंबर ऑफ शेयर्स आपको मैंने निकालना दिया, डिवाइड कर दोगे, यू विल गेट द बुक वैल्यू। नाउ बुक वैल्यू ऑफ दिस कंपनी इज कमिंग 78.8। नाउ अब इफ आई डिवाइड दिस बुक वैल्यू विद द करंट प्राइस, मेरा प्राइस टू बुक वैल्यू निकल के आ रहा है 5.36। मेरे को मारुति कितने पे मिल रहा था? 4.50। और मेरे को टाटा मोटर्स कितने पे मिल रहा है? 5.36। which is costly? मेरा टाटा मोटर्स का देखो। अब देखो टाटा मोटर का शेयर 400 रुपए का, 400-450 का। मारुति का शेयर है 8,000 रुपीज का, 8,500 रुपीज का। लेकिन फिर भी मारुति सस्ता, मारुति इज चीपर अगर आप वैल्यूएशन कर रहे हैं। और अगर आप ऐसे ही देख रहे हैं तो वो मारुति महंगा, मैं टाटा मोटर खरीद लेता हूँ। और फिर लोगों का शेयर मार्केट में लॉस होता है, कहते हैं शेयर मार्केट इज जुआ, सट्टा, स्पेकुलेशन, समथिंग, बिकॉज दे डू नॉट नो द वैल्यूएशन, दे डू नॉट नो हाउ टू कंपेयर, दे डू नॉट नो द कॉस्टिंग। पता तो है नहीं, बस कोई टिप आया खरीद लिया। तो ये दो मेथड है। हम जनरली जो न्यू एज कंपनीज उसको पी के बेसिस पे कंपेयर करते हैं, एंड जो ओल्ड कंपनीज उसको बुक वैल्यू के बेसिस पे कंपेयर करके, एंड देन वी सी कि हमें किस कंपनी में, अगेन आई एम टेलिंग दीज आर नॉट सम एब्सोल्यूट थिंग कि केवल हमने ये देखा और खरीद लिया। नाउ अब मुझे जब डिसीजन लेना था, मैंने ROC, ROE, प्रमोटर्स होल्डिंग, ये वो ग्रोथ, वो सब देख लिया था। अब मुझे डिसाइड करना था मैं मारुति और टाटा मोटर्स दो में आगे फंस गया हूं, क्या लूं? मैंने देखा नहीं जी, मारुति इज चीपर, टाटा मोटर्स इज महंगा, देन आई विल। तो देयर आर मेनी फैक्टर्स, देन वी डिसाइड व्हाट टू बाय एंड व्हाट नॉट टू बाय।
आई होप मैं आप लोगों को समझा पाया होऊंगा। और प्लीज मैं अभी भी देख रहा हूँ सम पीपल आर पार्टिसिपेटिंग एक्सीलेंट, आई एम गेटिंग द लॉट ऑफ रिस्पॉन्स ऑन सम ग्रुप्स। एक तो आप लोग अपने ग्रुप्स के नाम, जो कुछ लोगों ने लिखा है, प्लीज अपने ग्रुप के नाम को चेंज करके उसमें अपने स्कूल का नाम जरूर ऐड करो। सो दैट किसी 2-3 ग्रुप है इंटर्नशिप 23 के नाम से, तो इट इज नॉट इजी फॉर मी, फॉर यू पीपल, बिकॉज आपके पास सेम एक ही ग्रुप है, लेकिन मेरे पास 3 ग्रुप है इंटर्नशिप 23 के नाम से 2023। तो मेरे लिए दिक्कत है, तो प्लीज अपने स्कूल का नाम उसमें जरूर ऐड करो। दूसरा, प्लीज माय हम्बल रिक्वेस्ट, इफ यू आर डिवोटिंग योर टाइम एनर्जी, इस 7-8 डेज को लगा दो, ब्लॉग्स लिखो, फीडबैक्स लिखो, वीडियोस बनाओ, एक दूसरे से देखो, वैल्यूएशन करो। अब आपका काम है कि मैं 10 कंपनी का आज वैल्यूएशन करूंगा। ये नहीं कि पी क्या है मैंने नोट कर लिया, निकालूंगा मैं निकालूंगा, देखूंगा सेम आ रहा है कि नहीं, कहीं स्क्रीन पे गलत तो नहीं है। I will calculate the P, I will calculate the book value, I will calculate the P ratio, I will calculate the book value to, and then I will prepare Excel। 10 कंपनियां हैं, इसका ये बुक वैल्यू मेरे पास तरीका है, मैं आपको एक्सेल में 1 मिनट में बता दूंगा 10 कंपनियों के। लेकिन आई डू नॉट वांट दैट, आई वांट यू पीपल शुड बी डूइंग रिसर्च एंड देन सेंड योर एक्सेल। मुझे अच्छा लगता है, बिकॉज अगर आप सीखोगे, कल को आप कुछ बनोगे अपने स्कूल के लिए, अपने लिए, अपने पेरेंट्स के लिए, कुछ भी। आई डोंट नो हाउ मच, इफ आई एम कंट्रीब्यूटिंग 10%, 1%, 2% कुछ भी कर लूंगा। तो एनीथिंग, एनी वन ऑफ यू वांट टू गिव द फीडबैक ऑफ टुडेज सेशन, प्लीज। अरे फास्ट, यस यस, एनी टीचर, एनी बच्चा, any one of you? No one? Sir, today's a nice session, and again I revise everything which I have earlier studied. And yesterday I told to my student that is a very interesting part, and some of the students I have already little bit guide in the class, and I think they are Prashansa. You got some idea? Yes, sir. And what about Pranjal? Pranjal is there? Sayam, can you share feedback first time? I think today you are joining first time. Yes, sir. Please share your feedback, beta. Please. Yes, sir. Either you can speak in Hindi, English, whatever you are comfortable. Yeah. अच्छा, एक चीज और बता रहा हूँ, I have seen a lot of videos by you people. Maybe जब whenever you have to talk in your feelings ना, मुझे इंग्लिश हिंदी से कोई मतलब नहीं है। आप अपने फीलिंग, अच्छा एक चीज और, I want to thank my teacher, I want to thank Sunil। No, आपने जो लर्न किया है ना, जो आपने सीखा है, उस पे वीडियो बनाओ। वीडियो बना रहे हो, व्हाट इज पी पे वीडियो बनाओ, व्हाट इज बुक वैल्यू पे वीडियो बनाओ, हाउ पी इज यूजफुल टू वैल्यू अ कंपनी, इस पे वीडियो बनाओ। बिकॉज यूर लर्निंग, मेरा पर्पज ये नहीं है कि आप क्या कर, पर्पज ये है कि मैंने आपको बताया फर्स्ट डे टू 8 डेज में मैं आपके अंदर चेंज देखना चाहता हूँ, और अगर वो चेंज नहीं हुआ तो फिर मेरा ये पूरा इंटर्नशिप का जो पूरा वो कंसेप्ट है वो डिफीट हो जाएगा। तो कुछ स्कूल हैं जहां से मुझे 3-3, 4-4 वीडियोस भी मिल रहे हैं, कुछ स्कूल है जहां से एक मिला है, डिपेंडिंग अपॉन। एक स्कूल ऐसा है जिसने 3 बच्चों को कंबाइन करके भेजा, बहुत अच्छा लगा मुझे। एनीवे, I want everybody's participation. My mentor teacher से मेरा humble request है, please ensure करें कि हर बच्चा जो participate करे, because in some form maybe somebody is very good in making videos, somebody may be very good in writing. मुझे पता है कि if somebody is participating in stuff on internship, वो normal बच्चा नहीं होता, वो एक extra एक step करने वाले बच्चे होते हैं, वही इन चीजों में भागते हैं। normal बच्चे तो अपने स्कूल का होमवर्क ही नहीं हो पाता उनसे या वो, तो इसलिए प्लीज आप लोग एक डिफरेंट हो। मान लो कि you people are different, you are doing different work, you are doing something extra than ordinary people. You have to accept this thing कि I am different, I will means have something, मैं दूसरों से अलग रहूंगा और हर स्टेप पे अलग रहूंगा। Yes, sir. मैं आपको बता रहा हूं, अभी आपको नहीं पता चलेगा, आज के 4 महीने बाद जब आपके स्कूल में बुक 3 पढ़ाई जाएगी ना, then you people say, ओ ये तो मैंने पढ़ा था, वो 8 दिन में मैंने ये सब पढ़ लिया था। ये आपको पता चलेगा, मैं आपको प्रॉमिस करता हूं। मैं आपको क्वेश्चंस तो करना नहीं सिखाऊंगा, कैश फ्लो कैसे बनाते हैं, रेशियो कैसे कैलकुलेट करते हैं, लेकिन कंसेप्चुअली यू विल बी मोर स्ट्रॉन्गर। जितने भी फॉर्मूला किसी को आते हो, लेकिन आपका जो कंसेप्ट होगा वो उन सबसे बेटर होगा, दैट आई कैन प्रॉमिस यू। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। आई विल बी वेटिंग फॉर योर फीडबैक, वीडियोस, रिटन कम्युनिकेशन, ब्लॉग्स, एक्सेस। Thank you very much everyone. Every day we are joining at 8:30 and maybe tomorrow link change हो जाए और कुछ लोगों को मिले ना मिले, depending upon your participation in the class, videos, feedbacks.